to our FOSS Files Season 4, that is API Alchemy. And the title of today's episode is Uncovering RPCs. तो like आप सबने लास्ट एपिसोड्स तो अटेंड किए ही होंगे, राइट? किस किसने लास्ट के सारे एपिसोड्स अटेंड किए, या फिर हाँ 2 किए, 3 किए? आरपीसीज, सॉरी, माय अपोलॉजी, मैंने गलत पढ़ लिया शायद। दैट इज द प्लूरल ऑफ आरपीसी, राइट? किस किसने मतलब आप अभी तक के एपिसोड्स अटेंड किए? 1 किए होंगे, 2 किए होंगे, या फिर सारे किए होंगे तो वेल एंड गुड। किसी ने नहीं किए? किए हैं? मी, यस, आई श्योर डिड। हाँ, ऑल माइनस वन, या मी। और जो जो कोई भी रेगुलर है, या फिर जिसने भी अभी तक के एपिसोड देखे हैं, उन सबको पता ही होगा कि हम मतलब हमारा डिस्कशन क्या लेवल पे होता है, हम कैसे डिस्कस करते हैं, चीजें कितनी इंटरेक्टिव रहती है, राइट? तो क्या मुझे अब कोई बता सकता है लास्ट हमारा एपिसोड का टॉपिक क्या था? लास्ट एपिसोड का टॉपिक क्या था हमारा, जो अभी एपिसोड हुआ लास्ट, इसके आरपीसी से ग्राफक्यूएल, राइट? ग्राफक्यूएल। और सबने, जब जिन जिन लोगों ने अटेंड किया उन सबको समझ आया था कि ग्राफक्यूएल एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और उसकी फंक्शनैलिटीज क्या थी। और हमने लास्ट में एक बढ़िया सी क्विज भी अटेंड की थी, राइट? जिसमें बहुत मजा आया था। तो आज भी हम ऐसे ही कुछ इंटरेक्ट मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कवर करने वाले हैं। और आरपीसीज क्या होती है, उसके थ्रू हम कौन सी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब हमारे प्रेजेंटर्स तो दिखाएंगे ही, दे विल बी शोइंग। पर अभी हम एक बार काउंट चेक भी कर लेते हैं। अगर आपके कोई दोस्त जो कि अटेंड करना चाहते हैं या फिर रह गए, तो उनको एक बार मैसेज कर देना, कॉल कर देना, ताकि वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। डिस्कॉर्ड पे भी हमारी लिमिटेड सीट होती है। अगर वो डिस्कॉर्ड पे नहीं आ रहे, तो यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम चल रही है साइड बाय साइड। उसमें कुछ डिले या फिर कोई नहीं है, साइड बाय साइड लाइव स्ट्रीम चल रही है। दे कैन हियर इट ऑन वाईटी एज वेल। उसकी लिंक भी ग्रुप्स पे सर्कुलेट हो चुकी है लाइव स्ट्रीम की। अगर डिस्कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी को, तो उनको बोल देना कि यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां के भी चैट्स और ये पढ़े जाते हैं थ्रू आउट द पॉडकास्ट। ठीक है? एंड आई थिंक एक थोड़ी देर में हमारे प्रेजेंटर स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो क्या लगता है आपको आरपीसी सुन के, किस किस बारे में होगा, क्या टॉपिक होगा उसका? मतलब सब टॉपिक क्या हो सकते हैं आरपीसीज में? किसी को कुछ आइडिया, या फिर कुछ मैंने सुना है यार आरपीसीज किधर, तो देखा है, पढ़ा था किसी वेबसाइट पर, ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना? आरपीसीज किसी ने तो देखा होगा एक्सेप्ट आवर प्रेजेंटर्स। किसी को पता है आरपीसीज क्या होते हैं, या फिर उसके बारे में कुछ पढ़ा है किधर, तो सुना है? नो, ब्लैंक एज कैनवास, ओके। +1 कर देना उसमें, क्योंकि आई एम ऑल्सो ब्लैंक एज ए कैनवास अबाउट आरपीसीज। और किसी ने कुछ सुना है या फिर देखा होगा?
सब टॉपिक्स तो आपने देखे ही होंगे आज मैसेज में, जो पिछले बार सर्कुलेट भी किया है, उसमें सब टॉपिक्स तो आप सब लोगों ने देखे ही होंगे. The canvas will surely be painted with a lot of color today. Yes, प्रतीक्षा. And यार देखो, आज के भी एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड. और अगर आपके कोई दोस्त या फिर कोई फ्रेंड जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो रह गए, तो उनको एक बार बोल देना, रिमाइंड कर देना, मैसेज कॉल कर देना, ताकि वो भी ज्वाइन हो सके. और यूट्यूब डिस्कॉर्ड दोनों पे भी साइमल्टेनियसली चल रहा है. अगर उनको डिस्कॉर्ड पे दिक्कत आ रही है तो दे कैन स्विच इट टू यूट्यूब. यूट्यूब के अगर चैट में आप कुछ डाउट डालते हो या फिर करते हो तो वो भी पढ़ा जाएगा. Okay, so 9:40 should we झाले. start, Aditya? Yes. Okay, then let's start. And एक बार यार चैट में सब रेडी लिखेंगे कि यार रेडी हो आप, so that our presenters can also have a good energy, right? उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा. रेडी? यस, लेट्स गो. राइट, आज का भी पॉडकास्ट जबरदस्त होने वाला है. यस, रेडी 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 रेडी. यस, लेट्स गो. Let's go. Over to you, Aditya. Yes. So I welcome you all to the fourth episode of this season, and today we'll look at what RPCs are. I think most of you guys would have heard this term for the first time, but let us see. And we'll explore topics such as JSON RPCs, XML RPCs, and obviously gRPCs. So let us start. I'll ask Pratiksha to take over. Okay. So, am I audible, everyone? Is Yes, my voice clear? you are. Okay. So, let's start with this session today. But before heading on towards what are RPCs, हम एक बार एक quick revision ले लेंगे of the last episode. Okay, but before that, let's just see the what are the points that we are going to study today. So we have introduction to remote procedural calls, that is RPCs. Then we have a distinguish between RPCs and REST. Then HTTP RPC. Then we have gRPC and protocol buffers. And at the end, we have a comparison between the different RPC frameworks that we are going to study today. So let's just revise the previous episode, which was on GraphQL. Okay? So it would be better कि आप सब लोग, if you know the answer, you just unmute yourself, right? Let's just keep the session more interactive. Okay, so the first one is, what were the drawbacks of REST which were overcame by GraphQL? So last session में हमने पढ़ा था, right? There were a lot of particular drawbacks that REST had, and GraphQL से वो drawbacks जो है overcome हुए थे. So any idea? If you can unmute and tell the answer, then it's the best. Yes, Pooja says in REST we get unnecessary extra data. And okay, right. And so this is, we can say, we had the two drawbacks, right? Overfetching and underfetching in REST. Yeah, and Tanish says only required data is returned in GraphQL. Right. So these two drawbacks were there, overfetching and underfetching of REST. Also, there was another drawback which was related to endpoints and resources. Like, can someone recall that? Data fetch. Okay, data fetching, like वो तो एक point हो गया. But we also had a point of about endpoints, right? कि REST में क्या होता है? We have multiple endpoints, है ना? But GraphQL में we have a single endpoint जिससे हम request करते हैं, right? Yeah. So these were the drawbacks of REST.
जो हमें GraphQL में मिलते हैं. So the second one is what is a schema? ये तो सबसे easiest question होगा. Okay, Tanish says order. Yes, Pooja, a blueprint of GraphQL. It is correct. तो schema को हम define कर सकते हैं blueprint of the GraphQL API. और schema में like last episode में हमने देखा है we define various type definitions in the schema, right? हमने I guess एक example के through schema देखा था. So किसी को याद है what were the type definitions that we had in the schema? Last episode में. Right, Pokemon था. Yes, Pokemon. Right, भूल गए क्या सब? Okay, so I was talking about the type definition. So हमने Pokemon as well as Master, right, and और भी कुछ define किया था schemas में. Yep. Okay, so let's move towards the next question. So what is used to modify data on the server? हमने REST में देखा था, right, that we have various HTTP methods to modify the data on server. तो वैसे what do we have in GraphQL? Correct, we have mutations. Right, so mutations say and also mutations जो है वो schema में भी हम add करते हैं, right? याद है we had the type mutation too in the schema previous episode में. Okay, and the last one is Fortis Apollo. DB for GraphQL. I guess पूजा थोड़ा सा confused है. Yes. Database for GraphQL हमने बाद में yes discuss किया था. T-graph. Apollo is we can say similar to हमने जो REST के लिए Postman use किया था, right? So it is a client and server for GraphQL APIs जहाँ पे हम APIs build कर सकते हैं and we can test our GraphQL APIs, right? Yes, no need to be sorry. Okay, so now that we are done revising processes जो कि एक same system पे है उन दोनों के बीच में communication लाने के लिए this is a mechanism. ठीक है, तो ये जो है you'll study about this much more in operating system also. So IPCs में क्या होता है दो प्रोसेस के बीच में communication हम दो ways से establish कर सकते हैं. So does anyone remember the two ways जिससे हम inter-process communication establish कर सकते हैं? जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा they might remember it. User mode and kernel mode. Okay, we can say कि हम एक way में user mode and kernel mode use करते हैं, but it is not the type of ways in which IPCs go. Okay, Yash is saying something about interrupts and system call. Okay, anything else? Okay, so interprocess communication जो है वो दो ways से हम establish कर सकते हैं. First way is through shared memory space, ठीक है, and the second way it is through message passing. Now, what is the first way? That is shared memory space. तो हमारा let us suppose हमारे कंप्यूटर में दो processes है, right? First is process A and the second is process B. अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ communicate करना है तो वो क्या करती है दोनों process जो है एक agreement पे आती है. ऐसे तो हर operating system में every process is separated and isolated, ठीक है,
बट फॉर कम्युनिकेटिंग ये दोनों प्रोसेस एक अग्रीमेंट पे आती है कि इतना लेट अस सपोज वी हैव अ मेमोरी एरिया एंड ये मेमोरी का एरिया जो है दैट विल बी शेयर्ड बाय प्रोसेस ए एज वेल एज प्रोसेस बी, मतलब दोनों प्रोसेसेस में वो मेमोरी जो है कॉमन होगी, ठीक है। सो फिर लेट अस सपोज प्रोसेस ए के पास कुछ डेटा है दैट इट वांट्स टू कम्युनिकेट विथ प्रोसेस बी, तो प्रोसेस ए क्या करेगा, जो भी हमारा शेयर्ड रीजन है उस पर वो डेटा राइट करेगा एंड देन प्रोसेस बी उस शेयर्ड रीजन पे जो है उसका डेटा रीड करेगा। ओके, सो दिस इज हाउ शेयर्ड मेमोरी से दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। सो इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ओके, नाइस, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द मेथड, राइट? ओके, once more, do I explain the part of shared memory space, right? ओके, सो आई एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट। शेयर्ड मेमोरी स्पेस में क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस ए है एंड प्रोसेस बी है। अगर दोनों प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करना है, पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों प्रोसेसेस जो है आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेट करने के लिए दोनों प्रोसेसेस एक अग्रीमेंट पे आते हैं कि एक पर्टिकुलर मेमोरी का पार्ट होगा जो दोनों प्रोसेसेस जो है कॉमनली शेयर करेंगे। सो लेट अस सपोज प्रोसेस ए को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कॉमन जो एरिया है उसमें इंफॉर्मेशन राइट करेगा, ठीक है। एंड प्रोसेस ए क्या करेगा, उस कॉमन एरिया में से देन वो इन्फॉर्मेशन रीड करेगा। सो दिस इज हाउ एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस के द्वारा वी कैन से दोनों प्रोसेसेस के बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है। लाइक इज इट क्लियर? ओके, नो, the writing and reading that is isolated. If the process will write at the same time, then जो है डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, राइट? सो रीडिंग एंड राइटिंग जो है दोनों ऑपरेशंस जो है वी कैन से ऑपरेशंस आइसोलेटेड रहेंगे। अगर एक हो रहा है तो दूसरा विल नॉट बी देयर। Is there any mediator daemon in this agreement? No. In shared memory space there is no mediator daemon. जो हम सेकंड ये देखेंगे वे देखेंगे, इसमें वी कैन से देयर इज अ mediator. Okay, so is the shared memory space clear? Should I move forward? Okay, so second हमारा जो वे है that is called as message passing. So message passing में क्या होता है, जैसे यश ने बोला था system calls and interrupts, right? So message passing में we have the concept of system calls. अब बहुत सारे लोगों ने I guess study किया भी होगा system call. So what is that? हम system call बोल सकते हैं कि अगर कोई भी दो processes हैं वो communicate करना चाहती है एक दूसरे से, that processes will communicate by we can say taking the kernel of the operating system as a mediator. अगर प्रोसेस ए को प्रोसेस बी से कम्युनिकेट करना है तो पहले क्या करेगी, प्रोसेस ए जो है एक सिस्टम कॉल देगी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को। सिस्टम कॉल को बेसिकली हम एज एन इंटरप्ट ही बोल सकते हैं। सो कर्नल को वो इंटरप्ट देगी, देन द कर्नल विल एक्ट एज अ मीडिएटर एंड वो जो है सेकेंड प्रोसेस से कम्युनिकेट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसेस ए, ठीक है। सो मैसेज पासिंग इज वी कैन से सिंपल आर्किटेक्चर, और इसमें और भी चीजें हैं एंड दैट in terms of RPC is not needed right now. You can study that more like further in detail when you all study operating system. But is the idea of message passing clear? Kernel will act as a mediator and दोनों process के बीच में communication establish करेगा।
I think Vrishali, your mic is unmute. Can you please mute it? Okay, so now that inter-process communication, the gist of it is clear. Now let's head towards RPC. ठीक है. So inter-process communication में क्या था? हमने देखा था कि दो processes which are on the same system और same computer पे उनके बीच में communication establish हो रहा था, right? But RPC, as in the name, we have remote procedural calls. Now, remote मतलब क्या होता है? Does everyone know the meaning of remote? We say a remote server, right? So remote मतलब क्या? From far. Okay, not in our computer, but we can control it somehow. Right. Remote मतलब हम बोल सकते हैं कि those two servers or computers, they are not physically connected. वो दोनों जो है distinct locations पे रहेंगे. ठीक है. So remote procedure calls में क्या होता है? Let us suppose हमारे पास दो processes है, process A and process B, and ये दोनों processes को communicate करना है एक दूसरे से. But ये दोनों processes जो है वो अलग-अलग computers पे चल रही है. ठीक है. सो रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम दोनों प्रोसेसेस जो अलग अलग कंप्यूटर्स या सिस्टम पे है उन दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ओके, इज दिस थिंग क्लियर? Am I audible? Like, is the thing clear? Okay. Everyone else? Okay, we are going to see how RPC works in the next slide, but till now सब clear है? Okay. So, yes, as we have seen, remote procedure call, it is a communication protocol. And इसमें क्या होता है? This allows a program to execute a remote procedure as if it were a local call. मतलब remote procedure में basically क्या होता है? अब अगर हमने बोला कि हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, वो एक रिमोट प्रोसीजर जो है एग्जीक्यूट करेगा सेकेंड लेट अस से एक कंप्यूटर पे है, बट उसका प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा दूसरे कंप्यूटर पे. सो रिमोट कॉल्स में क्या होता है? वी हैव नेटवर्किंग इन्वॉल्व, राइट? सो नेटवर्किंग के दौरान लाइक वी माइट हैव मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज की हमारा जो मैसेज है उसमें कुछ फॉल्ट्स आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, रिट्राइज आ सकते हैं, राइट? सो ये सब जो है हमें हैंडल करना पड़ता है. बट आरपीसीज क्या करते हैं? ये जो है सारे नेटवर्किंग का जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, दे एब्स्ट्रैक्ट आउट ऑल दी कॉम्प्लेक्सिटीज. ठीक है, मतलब अगर हम आरपीसीज के साथ काम कर रहे हैं, सो जो यूजर या डेवलपर काम कर रहा है उसको क्या लगेगा कि हम कोई नेटवर्क कॉल नहीं कर रहे. उसको जो है ये रिमोट कॉल को एक लोकल कॉल की जैसा प्रेजेंट करता है. एंड लोकल कॉल मतलब क्या? लेट अस से हम कोई सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में एक कोड लिख रहे हैं एंड वी डिफाइन अ फंक्शन देयर. हम जैसा सादा फंक्शन कॉल करते हैं ना, सो ये रिमोट कॉल को ऐसे फंक्शन कॉल में रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एक हमने रेस्ट एंड ग्राफक्यूएल की टाइम पे देखा था. अगर हमें रिमोट कॉल्स करना है, राइट, या फिर एपीआई कॉल करना है, तो वी नीड टू प्रोवाइड द यूआरएल एंड ऑल, बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता था, राइट? सो आरपीसीज ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज को अब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है. इट हाइड्स अवे ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज. ओके, एंड वेयर आर दिस आरपीसीज यूज्ड? सो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज होता है. ओके, एंड is the definition clear? अगर clear भी नहीं होगा, so we are going to understand this through an example, so don't worry about it, ये clear हो जाएगा. Okay, and RPCs जो है वो distributed system, that is
अगर हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसमें जो है बाय कन्वेंशन वी यूज आरपीसीज बिकॉज वी कैन सी इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्रोटोकॉल्स देयर आरपीसीज यूज करना इज मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट व्हेन वी आर डीलिंग विद माइक्रो सर्विसेज. ठीक है, so let's understand RPCs with an example. Okay, so let us suppose we have an application और उस एप्लीकेशन में हमें लॉगिन करना है. ठीक है, सो लॉगिन करने के लिए हमें हमारा ईमेल एंड पासवर्ड देना पड़ता है एंड देन वी गेट एन ओटीपी जिससे हम लॉगिन कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर दिस लॉगिन प्रोसेस हमारी एप्लीकेशन में जो है दो सर्विसेज है. फर्स्ट इज द ऑथेंटिकेशन सर्विस जो हमारा ईमेल एंड पासवर्ड एक्सेट्रा लेगा एंड सेकंड क्या आएगा, सेकंड इज द नोटिफिकेशन सर्विस. तो ये सर्विस क्या करती है, ये सर्विस जो है हमने जो प्रोवाइडेड ईमेल दिया है उस पर ओटीपी सेंड करने का काम करती है. ठीक है, सो दैट वी कैन लॉग इन इनटू आवर अकाउंट. सो ऑथेंटिकेशन सर्विस में वी हैव दिस फंक्शन लॉगिन. ठीक है, अब व्हाट डज दिस लॉगिन फंक्शन डू, इट टेक्स द ईमेल एंड द पासवर्ड and it performs some code which is I've just hidden it, shown it, like I did not show it here, which is basically the generation of access tokens and all, like it is not related here. So वो सारे कोड इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करके एट द लास्ट लॉगिन फंक्शन क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ओटीपी इस फंक्शन को कॉल करेगा. ठीक है, सो इस टाइम पे आरपीसीज काम आता है. अब नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ओटीपी ये क्या है, ये एक फंक्शन है. ठीक है, और ये फंक्शन जो है हमारा कौन से साइड पे है, ऑथेंटिकेशन सर्विस पे, राइट. सो ऑथेंटिकेशन सर्विस से ये फंक्शन जो है कॉल होगा, बट ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा हमारे नोटिफिकेशन सर्विस पे विच इज अनदर सर्विस. ओके, सो अब हम ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड नोटिफिकेशन सर्विस ये दोनों सर्विसेज दीज आर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क, राइट. और इफ हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ओटीपी और ये एग्जीक्यूट हो रहा है नोटिफिकेशन सर्विस पे, तो हमें एग्जीक्यूट करने के लिए एक नेटवर्क कॉल करना पड़ेगा. बट डज दिस नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ओटीपी लुक लाइक अ नेटवर्क कॉल टू यू ऑल, मतलब लग रहा है क्या कि इसमें हम कुछ नेटवर्क कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे एपीआईज कहीं पे दिख रहा है, डू वी सी एनी यूआरएल्स एंड ऑल हियर, नो, राइट. क्या लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ फंक्शन कॉल विच वी आर मेकिंग, हमने लाइक कोड लिखा है उसमें नॉर्मल जैसे फंक्शन कॉल करते हैं वैसा फंक्शन कॉल लग रहा है, राइट. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सी आरपीसीज जो है हमारे नेटवर्क कॉल को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं. अब जब भी ऑथेंटिकेशन सर्विस के पास एक ईमेल और पासवर्ड आएगा, इट विल गो टू द लॉगिन फंक्शन, उसमें ईमेल एंड पासवर्ड देगा एंड देन वो ईमेल एंड पासवर्ड लेके हमारा नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ओटीपी ये फंक्शन कॉल होगा. ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा बट ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट जाके कहाँ पे होगा, हमारी नोटिफिकेशन सर्विस पे एग्जीक्यूट होगा. मतलब फंक्शन कॉल जो है इट इज ऑन द ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड वो फंक्शन जाके एग्जीक्यूट हो रहा है ऑन द नोटिफिकेशन सर्विस. एंड इसकी सारी जो भी डिटेल्स है, अब इसमें अगर एरर हैंडलिंग भी आ गया, ठीक है, देन रीट्राइज आ गया, ये सब जो है इट इज हैंडल्ड बाय आरपीसीज. सो इससे भी कैन से हमारा काम जो है एकदम इजी एंड एफिशिएंट हो जाता है. जो हमें एरर हैंडलिंग की, देन कैन से जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में एरर आएंगे उसके जो भी कोड रहेगा वो हमें जो है खुद से लिखना नहीं पड़ता है. इट इज प्रोवाइडेड बाय आरपीसी इटसेल्फ. So like, is the thing clear, everyone? Why do we need RPCs? And वो कैसे हमारे नेटवर्क कॉल्स को एब्स्ट्रैक्ट करता है. Okay, if I'm going fast, you can tell that too. I could just slow down and explain. Okay, so should I move forward? Is everyone clear?
ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमने देखा राइट कि एब्स्ट्रैक्शन तो होता है, बट लाइक यू वुड हैव अ क्वेश्चन कि हाउ डज दिस एब्स्ट्रैक्शन ऑकर, कि मतलब कैसे पता चलता है कि सिर्फ नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ओटीपी ये फंक्शन कॉल करने से हमारा जो है सर्वर पे फंक्शन कॉल हो जाता है, राइट? सो इस एब्स्ट्रैक्शन like this abstraction is brought by something known as stubs. Okay, so let's see what stubs are. अब stubs जो है you will think कि मतलब technical terms में ही this we can say word seems a little bit absurd, right? But this is something which has been given the name as stub, and yeah, RPCs में ये use होता है. So एक stub basically क्या होता है? So for this example जो हमारा authentication service है and notification service है, so मैं simply authentication service को client बोलूँगी and notification service को server. Okay, so don't get confused. Just keep that in mind. Authentication service is the client and notification service is the server. Okay, everyone clear? ओके, सो स्टब्स को हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज हमारा क्लाइंट जो है वो रिटर्न है इन गो लैंग्वेज, ठीक है, एंड हमारा सर्वर जो है इट इज रिटर्न इन जावा. सो अगर हमारे क्लाइंट को हमारे सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो क्या होगा कि हमें रिडंडेंट कोड लिखना पड़ेगा ऑन द क्लाइंट साइड टू एंड द सर्वर साइड टू, राइट? हमारा डेटा जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है इन द इंटरनेट, राइट? बट जब भी हमारा क्लाइंट एंड सर्वर के पास वो डेटा पहुंचेगा, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लेट अस से द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अस टू रिसीव दैट डेटा. तो अगर दो अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारे सर्विसेज जो है लिखे हुए हैं, सो वी नीड टू राइट द कोड. डेवलपर्स को लिखना पड़ेगा फॉर एवरी स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट, जो भी यूज कर रही है. सो दिस प्रॉब्लम जो है इट इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ स्टब. अब हम स्टब को क्या बोल सकते हैं? स्टब को हम एक लोकल प्रोसीजरल कॉल बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है. सो लेट अस सपोज हमारा क्लाइंट है, उसके लिए स्टब को हम जो है एक नॉर्मल कॉल बोल सकते हैं. तो जब भी हमारा क्लाइंट कोई भी लेट अस सपोज जो हमारा ऑथेंटिकेशन सर्विस है, अगर वो कोई मैसेज अंडरस्कोर ओटीपी ये फंक्शन कॉल करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा? वो अपने क्लाइंट स्टब को कॉल करेगा, ठीक है? एंड क्लाइंट स्टब उसके लिए एक लोकल प्रोसीजरल कॉल है. सो सर हमारे क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि इट इज मेकिंग एंड नेटवर्क कॉल, राइट? एब्स्ट्रैक्टेड रहेगा नेटवर्क कॉल का कंसेप्ट उससे. सो वो हमारे क्लाइंट स्टब को कॉल करेगा. देन वो क्लाइंट स्टब क्या करेगा? जो भी उस मेथड को मेथड इन्वोक करने के लिए जो भी डेटा लगेगा, that is the method का name, also the parameters which are passing to the method, notification underscore OTP and various other things. ये सारी चीजों को एक let us suppose it will we can say that वो जो है इन सारी चीजों को पैक कर लेगा, एंड ये जो है पैक करके ये एक ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफर करेगा which we will be able to transfer through the internet. देन उस फॉर्मेट में पैक करके दिस डेटा ये जो है हमारे सर्वर को पास करेगा. अब सर्वर साइड पे हमारा सर्वर स्टब है, राइट? तो सर्वर स्टब क्या करेगा? सर्वर स्टब उस डेटा को अनपैक करेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट दैट डेटा एक ऐसे फॉर्म में जो कि हमारा नोटिफिकेशन सर्विस को अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास गो में जो है स्ट्रक्ट्स रहते हैं, राइट? एंड जावा में वी हैव क्लासेस, राइट? ये सबको पता है? We can say these are the data structures to hold data in Go and Java respectively. Everyone knows this? Hello, am I audible? Okay. Don't sleep, guys.
Okay, so let's continue. So हम बोल सकते हैं कि डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने का जो काम जो है वो हमारे स्टेप्स करते हैं एंड ये जो है हमारा डेटा ट्रांसफर जो है इजी कर देता है. तो जैसे मैंने बोला था गो में हमारा जो स्ट्रक्ट होता है वो जावा के क्लास में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट कन्वर्जन इट इज डन होल बाय आरपीसी. ठीक है, तो हमें क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड में कुछ डिफरेंट और स्पेशलाइज्ड कोड नहीं लिखना पड़ता है for the conversion of data. ठीक है, so this is how stubs work. So is everyone clear with the working of stubs? Or does anyone have any doubt? Okay, so shall we move forward now? Okay, so let's move forward. Okay, now that we have seen how, or we can say the basics of RPC and how the calls occur via stubs, अब हम देखेंगे the distinguish between RPCs and REST. Okay, so REST हमने पिछले sessions में देखा था that it is resource oriented, while RPCs जो है these are action oriented. अब like can someone tell me कि resource oriented क्या होता है? हमने REST के session में ये देखा था, right? You can all just unmute yourself. अगर unmute करके बताओगे तो it would be better. REST needs more resources. We can't take the meaning of that as resource oriented. But anyone else? Dealing with resources. Yeah, so resource oriented मतलब हम बोल सकते हैं कि in REST APIs we have only resources, right? Resources endpoints इसके साथ ही हम deal करते हैं and हम different resources को manipulate करते हैं with different HTTP methods, right? So this is the meaning of resource oriented. And RPCs क्या है? RPCs are action oriented. अब एक्शन ओरिएंटेड को हम प्रोसीजर या फिर द मेथड ओरिएंटेड ऐसा भी बोल सकते हैं. सो अभी हमने जो आरपीसीज देखा उससे कैन समवन लाइक डेसिफर व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ एक्शन ओरिएंटेड? Okay, Tanish is typing something. Everyone of action oriented. Okay, let's wait till Tanish and Pooja are finished typing. Okay, RPC do some work. On the other hand, REST only deals with resources like database. Okay. It actually automatically backs and unpack the code. Like no need of special code for that. Okay, that's one function of what RPC does. But
एक्शन ओरिएंटेड बेसिकली क्या होता है, अब हमने देखा था राइट कि हमारा जो क्लाइंट है उसे नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ओटीपी ये फंक्शन कॉल करना था राइट, बट ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा था, सर्वर साइड में राइट. इज दिस क्लियर? यस, मतलब जो नोटिफिकेशन अंडरस्कोर ओटीपी उस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन था वो सर्वर पे था, ठीक है. सो एक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या कि हमारा क्लाइंट जो है उसे उसके मैसेज में हमारे फंक्शन कॉल का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है राइट, एंड ऑल्सो उसके पैरामीटर्स भी पास करने पड़ेंगे, ठीक है. सो दिस इज एक्शन ओरिएंटेड, मतलब या फिर उसको बोल सकते हैं अपन प्रोसीजर ओरिएंटेड. एक मेथड जो है हम हमारे सर्वर क्लाइंट से जो है वो मेथड का नाम भेज रहे हैं एंड दैट मेथड जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे सर्वर पे है एंड वो मेथड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है. सो दिस इज एक्शन ओरिएंटेड. यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वी कैन से एक्शंस के थ्रू होता है. इज दिस क्लियर? द मीनिंग ऑफ एक्शन ओरिएंटेड. एक्शन को हम बेसिकली मेथड बोल सकते हैं या प्रोसीजर. ओके. ऑल्सो अगर हम प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करें सो आरपीसीज में वी कैन यूज एचटीटीपी, टीसीपी एज वेल एज यूडीपी. बट हमने रेस्ट में देखा था राइट कि रेस्ट में वी प्राइमरीली यूज एचटीटीपी और एचटीटीपीएस. सो दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट. देन आरपीसीज में क्या होता है, जो हमारा डेटा फॉर्मेट रहेगा ट्रांसफर का वो बाइनरी भी हो सकता है या फिर टेक्सचुअल भी हो सकता है. अब टेक्सचुअल डेटा में क्या आएगा, वी हैव जेसन एंड एक्सएमएल जो हमने बहुत दिनों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड बाइनरी डेटा फॉर्मेट में क्या होगा, हमारे आता है प्रोटोकॉल बफर्स. अब प्रोटोकॉल बफर्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल, ये जो है यू विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके. एंड रेस्ट में क्या होता है, वी ओनली हैव टेक्सचुअल डेटा, मतलब जो भी डेटा ट्रांसफर रहेगा वो सिर्फ हम जेसन में कर सकते हैं या फिर एक्सएमएल में कर सकते हैं, ठीक है. सो एज बाइनरी डेटा ट्रांसफर होता है आरपीसीज में, सो आरपीसीज में जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द टेक्सचुअल डेटा. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आरपीसीज. एंड ऑल्सो आरपीसीज जो है इसमें इंटरेक्शंस दे कैन बी स्टेटफुल एज वेल एज स्टेटलेस, बट रेस्ट में वी ओनली हैव स्टेटलेस इंटरेक्शंस. सो कैन समवन does anyone remember what is the meaning of stateless? हमने रेस्ट में बहुत बार ये टर्म यूज किया राइट. Yes, as Aditya says in the chat, RPCs can use a custom application layer protocol depending on what you're talking about. But REST में हमारे पास सिर्फ HTTP यूज होता है. No other protocol can be used. Yes, Pooja, it's right. The server, it does not store information about the previous request. So this is stateless. So RPCs में हमारे पास stateless and stateful दोनों हो सकता है, but REST is always stateless. Okay, so this is how we can see RPCs and REST are different from each other. So let's move forward, shall we? Is everything clear till now? Type a yes or no in the chats. Okay, so let's move forward to HTTP RPCs. अब HTTP RPCs क्या है? These are one of the types of RPCs जो protocol based हम discuss कर रहे हैं. So HTTP RPCs ये जो है तीन टाइप के हमारे पास. First is JSON RPC, second is the XML RPC, and third is gRPC. Now we are going to see these RPCs one by one in the further session. Okay, so start करते हैं with JSON RPC. Okay, so JSON RPCs सुन के क्या लगता है तुम लोगों को, क्या हो सकता है JSON and XML RPC सुन के? I guess name से भी पता चल ही जाता है. Anyone?
they convert JSON data to binary or something like that. Textual data format मध्ये use होणार RPC. Yeah, तनिष्ठ बोल रहा है. वो नहीं बल्कि I guess Pooja is more closer to the answer. JSON RPC simply हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो डेटा फॉर्मेट यूज होता है that is JSON. Okay, so जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है it is in the form of JSON and it is a stateless and a lightweight protocol. अब JSON RPC में क्या होता है? We have a request object and a response object. ठीक है? So request object क्या होता है? It is obviously sent by the client to the server. अब request object में हमारे कुछ members होते हैं. Now what are these members? Let's see. So पहला आ जाएगा JSON RPC. Okay, everything in small letters. So JSON RPC क्या होता है? ये बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है जिसमें हम जो है JSON RPC प्रोटोकॉल है इसका वर्जन स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है? Not like nothing much, सिर्फ वर्जन स्पेसिफाई करने के लिए ये एक स्ट्रिंग होता है. So we have the version 1.0 and 2.0. So both of the versions can be used. Okay, the second member is the method. Like, can anyone guess कि ये method member क्या हो सकता है request object में? What could be included in this method? जितना हमने RPCs अभी तक पढ़ा है on based of that. Okay, no problem if you can't. हमने देखा था राइट कि हमारा क्लाइंट जो है एक मेथड कॉल जो है एग्जीक्यूट करेगा, कॉल करेगा एंड वो एग्जीक्यूट जो होगा सर्वर पे होगा. तो क्लाइंट को सर्वर को इस मेथड का नाम भेजना पड़ेगा राइट. सो मेथड क्या होता है? ये this we can say member, it includes a string which defines or which specifies the name of the method which we want to invoke onto the server. Okay, as simple as that. Then we have a member named params. So params में क्या होता है? हमारे मेथड हमें जो भी सर्वर पे कॉल करना है उसमें जो भी पैरामीटर्स रहेंगे that parameters will be specified in the params field. And then the last field is we have an ID. So ID क्या रहेगा? It is a unique identifier which is given by the we can say client. And ये ID हम क्यों यूज करेंगे? एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, मतलब अगर हमने ID1 का रिक्वेस्ट भेजा है तो रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स में भी एक ID होगा 1. That is, this is a response for the request with ID1. Okay. Is everyone clear with the request object and all of its members? Simple है ये बहुत. It's just a request object. Okay. So now let's move forward and okay, before seeing the response object, we have a small thing to look upon which is a notification. अब notification क्या होता है? ये भी एक request object ही होता है, but हमारे लिए हर एक request object के लिए एक response आएगा राइट. बट notification एक ऐसा request object है जिसको response जो है necessary नहीं होता है. अब ये किस कंटेक्स्ट में हो सकता है कि लेट अस सपोज हमारे क्लाइंट को सर्वर को सिर्फ एक किसी चीज का नोटिफाई करना है. ठीक है, सो क्लाइंट को सर्वर से उसका रिस्पॉन्स लेने की कोई जरूरत नहीं है. इट विल जस्ट सेंड इट एज अ नोटिफिकेशन. ओके, सो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल थिंग. देन वी हैव द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. अब रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में क्या होगा? इसमें भी वी हैव सम मेंबर्स. सो फर्स्ट इज द जेसन आरपीसी एज हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में था. सिमिलरली जेसन आरपीसी क्या है? एक स्ट्रिंग है which contains the version of the protocol. Then we have the result object. ठीक है, अब result object में क्या रहेगा? It will have the result of the it will have we can say the response of the request.
ओके, देन वी हैव द एरर ऑब्जेक्ट. अब एरर में क्या रहेगा, ये एरर हमारा फील्ड जो है ये बेसिकली हमें जो है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसको हम बोलते हैं एरर ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लाइक आगे पढ़ेंगे. सो जस्ट ये जो है हम अभी के लिए थोड़ा होल्ड पे रखेंगे. एंड द फोर्थ थिंग इज एन आईडी. सो आईडी एज हमने देखा था हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग रहता है टू यूनिकली आइडेंटिफाइड. सो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में भी एक आईडी रहेगा. ओके, सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन. अब रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है एंड इसमें ये दो फील्ड्स है, रिजल्ट एंड द एरर फील्ड, राइट? सो डू यू थिंक बोथ ऑफ दिस फील्ड्स आर नेसेसरी? The result field and the error field. Think about it for a second. रिजल्ट फील्ड में क्या रहेगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है. एंड एरर फील्ड में क्या रहेगा, इफ कोई एरर ऑकर होगा तो वो उधर रहेगा. सो डज लाइक डू वी नीड बोथ ऑफ दीज फील्ड्स? Yes, right. As Pooja says, logically thinking, one of them is enough, right? अगर हमारे रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स आ रहा है, that means there is no error, right? And अगर error आ रहा है तो we will not have the result field. So the result and the error field, they cannot exist, we can say simultaneously. उसमें से कोई भी एक ही field जो है वो रहेगी हमारे response object में. Okay. And the last thing is the error object. अब error object में क्या रहता है? In error object, अगर हमारे हमने रिक्वेस्ट की है एंड उसमें कुछ एरर आया है, तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में एरर फील्ड देखा था उस फील्ड में ये एरर ऑब्जेक्ट होगा. दैट फील्ड विल कंसिस्ट ऑफ दिस एरर ऑब्जेक्ट. एंड एरर ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, वी हैव 3 सब फील्ड्स, कोड, मैसेज और डेटा. कोड क्या रहेगा, इट इज बेसिकली न्यूमेरिक फील्ड जो हमें बताएगी कि कौन से टाइप का एरर है. मैसेज क्या रहेगा, इट विल गिव अस द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एरर. And the third and the last field, data field क्या रहेगा, it will tell us more about the error, like error को और ज़्यादा descriptive way में हमें present करेगी. ठीक है. So these are the fields of the error object. अब in the code snippet shown आप देख सकते हो कि we have the request object and the response object. So first हमारा जो है वो request object है. अब request object में we have the JSON RPC field which is 2.2. We are using the version 2.2 of the protocol. Then we have a method field. अब method जो है हमारा, हम subtract method call करना चाहते हैं. And we have parameters with the parameters 42 and 23. And हमारे request की ID जो है it is 1. Okay. So let's see the corresponding response object for it. So response object में क्या रहेगा? We also have the JSON RPC 2.2, that is the version. Then we have result. अब result field में क्या रहेगा, जो हमने मेथड कॉल किया है वो कंप्यूट होके सर्वर से रिजल्ट हमें दिखाएगी, that is 42 minus 23, that is 19. Okay. And the last one is ID जो uniquely identify करेगा. So this is how we can say simply JSON RPCs work. So is everyone clear with this? Okay, so let's move forward and talk about XML RPCs. So XML RPCs में क्या है, the data format जो है, as the name suggests, it is XML. And XML RPC message जो है वो एक HTTP post request होता है. Okay, there is nothing more to explain XML RPC. It is as we can say similar as JSON RPC, but सिर्फ data format जो है XML होगा. So we will just quickly look into the XML RPC request and the response. So
रिक्वेस्ट में क्या होता है, जो लाइन है XML वर्जन 1.0, उस लाइन के ऊपर जो भी आप सब देख रहे हैं, दैट इज द HTTP हेडर. ओके, सो हेडर में क्या क्या पार्ट रहेगा, दैट द रिक्वेस्ट इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, then the endpoint that the request is directed to, which is /rpc2. Then we have the user agent, host, content type and the content length. ये सारे fields जो है हमारे header में रहेंगे. ओके, जहाँ पे यूजर एजेंट मतलब हम बोल सकते हैं इट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट का इन्वायरमेंट, कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है एंड ऑल दैट. होस्ट, we can say it is the domain name of the client, and content type and content name or length, these fields are self justified. Okay, then हमारे XML कोड में क्या होता है, लेट्स सी. वी हैव द वर्जन, आफ्टर दैट हमारा पूरा जो कोड है बंडल अप रहेगा इनटू दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज मेथड कॉल. ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा फर्स्ट रहेगा सब स्ट्रक्चर, दैट इज मेथड नेम, जहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें सर्वर में कौन सी मेथड कॉल करनी है. यहाँ पे वी हैव द मेथड examples dot get state name. Then we have parameters and the value, right? ये सारी fields रहेंगे जिसमें हम अगर हमारे मेथड को parameters चाहिए, so we will pass values of that parameter. Okay, so this is how a simple RPC request look like. Is this clear? Okay, so let's move forward to the XML RPC response. Similar to the request, we have the response. यहाँ पे भी the first everything above the version, it will be the HTTP headers. And after that, हमारा response जो है, it will be included into the structure which is called as method response. और इसमें क्या होगा, we have the parameters field, and इसमें भी हमारा जो भी response रहेगा वो as a string जो है included होगा हमारे parameters में. So yeah, this is all about the request and response format of XML RPC. Like, सबको clear है? If it is, then just type in a yes in the chat. Okay. So with this, I'm done with my part. I hope you understood everything. And if any doubt, you can just ask it into the chat section. Now I would like Aditya to take over the session. Thank you, Pratiksha. So now the third part. I think this is the most interesting protocol, RPC protocol out of the three. And let us see what gRPC is. So firstly, it was introduced by Google. So Google, as you know, they have many services, right? Like many Google services, you must use them every day. Like search, you use YouTube every day, Google Maps, Drive, everything, right? So Google must be using a very complex microservices architecture under the hood, and must need an efficient communication protocol between those microservices, right? So that is where gRPC comes in. So initially, Google used something called Stubby. It was its own RPC protocol. They used it internally. But in 2015, what they did is they open sourced it, the next version of their RPC protocol, and named it gRPC. So there are two interesting things that gRPC uses. First are protocol buffers, and what they are a serialization format like JSON and XML, as we saw previously. We'll look into them in more detail. But the second thing, it operates over HTTP2, but not just the standard HTTP2 protocol.
it they have their own customized version of this HTTP2 protocol. I think we saw HTTP2 in the first episode. Does anyone remember what were the benefits of HTTP2 by in that comparison? Okay, firstly, am I audible properly? Yes, you are. Okay. Does anyone remember what HTTP2 did? There were things like header compression, binary header format, and everything. Yes, so yes, multi-streaming and various other features. So what they did is uh, they chose the most efficient protocol for their needs. Basically, the overall goal is efficiency here, and they basically modified HTTP2 as we will see further, and this is not exactly compatible with the standard HTTP2 protocol. And then one more thing is that it is language agnostic, language and platform independent. So uh, what this means is you can use this protocol between any platforms and any programming languages. Like if you are developing microservices, if one server is written in suppose Go and it needs to communicate with another microservice which might be written in another language, say Java. So they can easily communicate between because there is a contract between them, a schema type thing. As we saw in the last episode as well, there was a schema in GraphQL. There is a schema here as well. We'll see look into that. Firstly, let's talk about protocol buffers. So what they are is a serialization alternative to JSON and XML. What is serialization basically? It is like formatting your data in a way that you understand, right? Or if transferring between two devices basically. So what they allow us to do is efficiently communicate, because JSON and XML, they are basically plain text. You know, you have to write the key in plain text and then the value in JSON and in XML as well. So what protocol buffers do is they allow us to write the schema and everything in plain text, but this can be efficiently converted into binary format as well. So it has the readability as well, but the efficiency as well. That is the benefit of using protocol buffers. Then language and platform neutral. Exactly the last point that we discussed, efficient binary serialization, as I said, and use protocol C, Proto C compiler. So this is a very special tool, a magical tool that allows gRPC to actually be language neutral. What this compiler does is it interprets your protocol buffer code and then it converts it into the programming language of your choice, the code for programming language of your choice. Exactly. So something like if you write a protocol buffer and then you pass it through Proto-C with some argument, like for example, if you want to generate Java code, then it will generate an actual Java code which resembles the schema of your protocol buffer, and that is how you can use it in any language. This compiler is called Proto-C. We'll quickly look into a simple example of a protocol buffer file. As you can see, with a message keyword, a person thing is declared. This message is, you can think of this message something like a struct in C or a data class in Java, which only contains data members. Basically, there is also something called a service. So protocol buffers are basically just messages and services. Messages you can think of as structs, or as I said, data classes, and services only contain functions. They do not contain these data members. So that is how we represent all of this. And you can think of this thing like you can compile this thing into any language of your choice. If you compile it into C++, it will obviously generate a class of person and with these data members.
Did you understand this thing? That compilation part. This not it is not compiling it to machine code or anything. It is compiling it to another language actually. We look at the generated code. This is a very simple example. It was, you can see this was the server code. So this what this protocol buffer file also does is it acts as a schema or as a contract between the server and the client. So in what exact format the data can be transferred between the client and server. If we look at that message person, you can see in Java we can on the server we can obviously initialize this in the Java format. In the top level code here, they must have imported the generated class. Similarly here, the generated header files in C++ code. So you can see by using a single protocol buffer file, you can actually generate two different trees of code, and they can intercommunicate with each other. If you look at what exactly this is doing, a person, it is initializing a object of type person with these functions used as setters, and then this is basically writing it to a file. This is just a temporary thing because in actuality this after generating this we will usually transfer it. The gRPC automatically handles the transferring of this binary data over to the client side, but right now they are just outputting the binary data to a simple file, and similarly here they are reading from that binary file and parsing it. You can see it can be parsed and the John person can be built again. Protocol buffers are actually independent of gRPC, but they are basically just made to use together. You can actually use gRPC with JSON and XML as well, but then it doesn't make any sense. Also, you can use protocol buffers with standard normal HTTP. Did you understand this? So this is what I mean, right? I think for the methods, I'll switch to. I also have one another example on JavaScript. So I'll switch my screen to my code. I'm getting no responses in the chat. Is everybody understanding what I'm saying? Yes. All right. So I think everyone can see my screen. This is a simple schema.proto. The file extension for a protocol buffer is .proto. And then this is one simple protocol buffer file. The top level statements, you can see we define the syntax, the version of protocol buffer that we use, and the package name. So this is a simple schema for calculating hashes actually. Calculating is anybody asleep? All right. So क्या कर रहा है ये जो पैकेज है आपका स्ट्रिंग लेगा, आपका जो भी डेटा है वो लेगा, एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू ए cryptographic hash of with the algorithm of your choice. I think this is very simple. I think you know about hashes, right? SHA-1, SHA-256, bcrypt, MD5. So there is some processing going on, right? You're completely awake. So again, let us see what this is. These are the message objects. Again, message, as I said, something you can think analogous to structs, which only contain the data members. Type is string, the name is data, and this is a special ID number which we assign to it. So this, I think you can assign it yourself, but it has to be unique. This is just a quirk of gRPC, and obviously we choose the most sensible scheme, that is one
starting from natural numbers and going on, right? 1, 2, 3, 4. Similarly, a hash response. So these are basically classes that define what the request will contain and what the response will contain, how exactly they will be formatted. So, and this is the service. Yes. The service, as I said, you can see analogous to a class which only contains the functions. You can see the RPC method get hash. So one service can contain multiple methods, just like one class can contain multiple methods. And right now you can see there is a simple get hash function which uh, takes the parameter as a hash request. You can see we just defined it here, hash request object, and returns a hash response object. This is a language independent way to describe things. Something like C++, obviously all of this will, all the three will be compiled into separate classes, and the code will be appropriately used. If we are using something like JavaScript, we'll see exactly what it does. So right now, if you see in my package.json, I have various gRPC packages installed and also the protocol buffer JS package installed. These allow us to use protocol buffers in our JavaScript code, and also one script that is here. I'm actually using the Proto-C compiler as a npm package rather than installing it system wide. You can see the command is very big. You don't need to worry about this because we are again not talking about a specific language. It is just concerned regarding things like the JavaScript standard, whether it is using CommonJS or ECMAScript for everything. And basically the schema.proto file which we previously defined. So with all of that in place, you can see we have a main.js file. We import the required statements and do some basic setup. Again, this will depend on the programming language of your choice. But basically, if you see, we created a server. Now, what is this IP address? What is this called? This IP address. Localhost, right? Yes. So this IP address, we are basically hosting this server on the IP address that is our localhost and port number 8000. Along with this, there is one another parameter in here. This is basically asynchronous callback function. If you know JavaScript, this is the callback that we are using, and these are the parameters. So grpc.server credentials.create insecure. So as I mentioned previously, grpc uses its own custom implementation of http2, right? So in normal http2, it is actually mandatory to use a encryption scheme like TLS, I believe. And but here we can actually bypass that because grpc again uses its own http2 implementation. So we then again we added this service exactly as defined here, and we map the function get hash. We define the function here. We will map it to the JavaScript function calculate hash, which will take a call and callback. This is something like if you have built Express servers, you usually have a response and a request object right here. So this is something like that, only that this is an actual function, not an object. This is an object. So this will basically calculate the hash using the Node.js crypto library and will return the hash. Don't need to worry about the implementation, but the basic idea is that we basically map this get hash function to our JavaScript function. Is this clear? I choose JavaScript because I think it is I think it gives much more cleaner code, and we previously saw C++ and Java code as well. So now I'll host a simple server, node main.js. You can see the server is running on localhost 8000.
What I will do is, I think I will have both of them on the screen. I think you can see both Postman and my code. Uh, to open a gRPC or specific client on Postman, you have to go to new and choose gRPC here. Again, let us put the URL, which is localhost 8000, and the method. So for the defining the method, I'm in the last episode, as we saw, we required the schema to be loaded first, right? So here the same thing, the schema, our protocol buffer file, will also need to be loaded. So I will just, for now, I'll just import it locally in my directory. I don't think you can see the window, but I'm just importing my schema here. There is also something called server reflection, similar to gRPC. gRPC also provides you the schema directly on the service, right? Here also we can do something called server reflection, but have not set it up yet. So, okay. Now you can see there is a single method that we get in this SHA service. Actually, the naming is a little, okay, one second. I think we first have to obviously define the parameters that we want to send, right? If we look at our protobuf file, okay, the schema, you can see the protobuf file has these parameters, the data and algo. So I will, because we are using JSON, we will need to define it like this: simply data, and then whatever data you want, say WLUG, and the algorithm for hashing. Now there are various algorithms for hashing, right? Just choose one, say SHA1, and then invoke. So it invoked the get hash method on the server and returned us the result. You see, wasn't this very easy? If again, if this was, we are using a gRPC client, right? If we were not using a client, these parameters actually would be passed by, if we were using, for example, a C++ client, then these parameters would actually be passed into the function that was generated. This is how remote procedure calls are implemented in gRPC. I think we can go back to our presentation. The same thing. Comparing, I think there is one more point before that. Yes, gRPC modes. So gRPC can actually operate in 4 modes. The ternary, which means a simple request response model similar to HTTP. So what gRPC is trying to do is, it is trying to fulfill every use case basically. It can try to be something like REST. It can be something like GraphQL, as we saw with the schema and everything. Can also be something like WebSockets, which we'll look into in the further episode. So server side streaming. So if we have something like you want to establish a stream between the client and server for sending a large amount of data, we can do so while the side on which you choose to create the stream. Based on that, the two methods are there, and then bi-directional. This is the most similar to WebSockets. So these are the modes basically. This is the easy, and then finally, I think the one more point was remaining was the comparison between RPC frameworks. So before that, I would like to ask you if everything was clear. Yes, you saw the quiz, right? So we'll simply compare all the three frameworks.
their serialization languages. Obviously, we discussed them, and these both are less efficient, obviously, because they use JSON and XML, which are plain text languages, and because gRPC uses protobufs, it is more efficient. Also, where low complexity, as you can see, we need a compiler here. We need to generate code, everything. So this is relatively more complex to implement. But where will you use all these RPCs in real life? I want to ask. JSON, I believe something related to web, because JSON is native to JavaScript. So it is easier to deal with JSON RPCs on the web, right? Again, XML I think has excellent support for almost all the programming languages out there. gRPC, again, it has support because it has its own compiler which compiles to all those different languages. And gRPC is primarily used to communicate between two microservices. We cannot usually use it on the web because, as I said, it uses a custom protocol, right? A custom HTTP2 protocol, and those are not supported by browsers. There is, I think, something called gRPC Web, which uses a proxy server or something to connect two things, two clients together. But I think gRPC is primarily used for microservices. So that is everything. Let us move on to quiz. Are you ready? I think everybody is ready, and I will post the link in a minute. Okay. Can go to the link in the chat and start the quiz. The interface is exactly similar to the last time.
Yes, exactly. Everything is summarized through the quiz. So, do you have any questions regarding? I think gRPC was covered in a relatively short time. The leaderboard is also visible. Nice. So I think I have the leaderboard. First is Sai 2.0, which is I think it is Yashasvi. The second is Yash. Third is Pooja. Fourth is Datta. Yash missed by about 12 seconds. Right? I think it is time. I think it is time to conclude. I hope everyone stood. Yes, the blank wall is now covered, and the next time we will be seeing what web sockets are. Okay, so hope everything was clear to everyone. Should we conclude the session now? Okay, so let's meet next Saturday. And in the next session, we are going to be discussing WebSockets.